jala di thadanga Thava subhaname jage Thava subhasi shambhage Gahe Thava jaya gana Jana gana mangala dayaka jaya he Bharat bhagya vidata Jaya he Jaya he Jaya he Jaya 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 he
people chanting his surname in unison on the other side of the world. So I thought it was an extraordinary event. Consultancy firm Morning Consult, where the Indian Prime Minister has retained his popularity with an approval rating of 76%. But the Indian Prime Minister has been topping the list for the last few years, and according to the survey, 76% of the respondents have approved of his way of leadership. Meanwhile, only about 18% have disapproved of it, and 6% did not give any opinion. But the Indian Prime Minister's approval ratings are over 10 percentage points higher than the next top leader on the list. Second to the Indian Prime Minister, you have the Mexican President Andrés Manuel López Obrador, who is trailing with an approval rating of 66%. The President of the Swiss Confederation, Alain Berset, is back in third spot with 58% approval ratings. While the Brazilian President Lula da Silva stands in the fourth position of the list, and the Australian Prime Minister Anthony Albanese has claimed the fifth spot. The US President Joe Biden has come 8th on the list, and the recently released list with 37 approval ratings. The latest ratings are all based on approval ratings that have been collected from the 29th of November till the 5th of December. Now, the approval ratings are based on a moving average of 7 days of adult residence in each country with varying sample sizes, and Prime Minister Modi had topped the list ahead of India's general election scheduled to take place later in 2024. Beyond is now available in your desire to lift people out of poverty and move India forward as a global power is real. I had an incredible opportunity to spend more than an hour and a half with Prime Minister Modi, who is, I don't need to tell anyone here, he is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable, visionary, and his level of commitment to the people of India is just indescribable and deep and passionate and real and authentic. And his desire to lift people out of poverty and move India forward as a global power is real, and it is happening. But the best part of the meeting for me was this. Anyone who knows Prime Minister Modi, all of you knows, he is a tech guy, and he is deep into the details. So I found myself at his home at 7:30 on a Friday night talking about the details of radio access networks and artificial intelligence, and it was just amazing. And I said to him, and I'll say this to you, in the years to come, there will be two ecosystems of technology, one consistent with our democratic values and another not. And I said to him, the United States and India need to lead the world together in this technology ecosystem. And without missing a beat, after he traveled all week, he said to me, well, Secretary, AI doesn't stand for artificial intelligence. I said, really? He said, AI is America-India technology ecosystem. Giorgia Meloni has broken the internet. The Italian leader's selfie with Prime Minister Modi caught the attention of netizens with her caption and hashtag, which read, Melodi, a fusion on the surname of both of the leaders. Now, both leaders met on the sidelines of the COP28 summit held in Dubai. As soon as Meloni posted the selfie on her official Instagram, netizens couldn't keep calm. Memes and reels started to flood the internet as the picture garnered over 10 million views, more than 150,000 likes and thousands of comments. Here's some of the viral tweets on your screens. A section of the internet even pointed out that the two prime ministers were twinning in white, while some labeled it as the selfie of the year. Now, earlier, a video of the two leaders chatting at the summit had also gone viral. Prime Minister Modi also posted a photo with Meloni, saying that India and Italy are looking for a prosperous future together. The friendship between the two leaders first came to light at the G20 summit in Delhi in September earlier this year. Apart from Meloni, Prime Minister Modi also met other leaders like UK Prime Minister Rishi Sunak, Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva, and Turkish President Recep Tayyip Erdogan at the summit. And his delegation for visiting Australia, for paying honour to the relationship. The relationship with India when we were in government was quite extraordinary and productive. I want to acknowledge the work of former Prime Minister Morrison and many on the front bench, including Dan Tehan, who was intimately involved in trade negotiations and created the opportunities which, to government's credit, they've continued in relation to a number of these announcements. I was late into question time because I've been meeting with Prime Minister Modi in Sydney this morning. In a way, I wish the meeting had gone on a little longer. I would have avoided a bit more of question time, but it was a very cordial and engaging discussion, and the wide-ranging topics that we traversed gave an indication of the bipartisan support in the relationship, and Prime Minister Modi acknowledged that. It, of course, as the Prime Minister points out, followed on from quite an extraordinary event last night. There were lots of people in attendance from both sides of politics, but I said to the Prime Minister this morning that every politician there last night was jealous of the fact that he was able to get 20,000 people chanting his surname in unison on the other side of the world, mainly at Labor Party functions, yes. So I thought it was
I thought it was an extraordinary event, and I really acknowledge the work of the Indian community in hosting Prime Minister Modi. We have an amazing diaspora community, people who have contributed in many, many ways to our national life, and they are an integral part of not only the present day Australia, but into the future. The vision of a nation of equal people. Throughout your history, you embrace people from around the world, and you have made them equal partners in the American dream. There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me who had made history. I'm told that the samosa caucus is now the flavor of the house. I hope it grows and brings the full diversity of Indian cuisine. Issues on his visit to India. He praised Prime Minister Modi while saying there's nothing wrong in being a patriot, and he also said that some sections of media and politicians had labelled patriotism as dangerous. Listen to this exclusive, so. One final question. With India, where do you see your relations going forward, especially with a government that shares many things in common, to broaden that on economic policy, on illegal immigrants, on border security, on investments in general? The Make in India program, I think, has resonated with many countries. Yeah, actually we respect Prime Minister Modi very much because we respect politicians who are patriotic. And we look at patriotism as not something dangerous. Liberal mainstream, international liberal media, liberal politicians tend to pose patriotism as something bad and dangerous. We think totally to the other direction. Patriotism is good because we patriots, we respect each other. We respect President Trump a lot saying that America first, because what should he say? What is first? Or America's number what? So these are so hypocritical and politically correct criticisms. So we respect Prime Minister Modi a lot. Hopefully tomorrow the foreign ministers joining the Rise in a dialogue will be received by him. That's going to be a great honor for us, of course. And we have also discovered these similar kind of approaches to major dilemmas of global economy and global politics between the two administrations. Yes. But we have to put it into consideration that you are a superpower, we are a small Central European country, so the dimensions are different. Yes. But still, let's say the direction of the approach is pretty similar. I hope I asked this question as my first question to you. Very interesting. You say that he's a patriot. There's nothing wrong with being a patriot. My last question to you. In many, this Prime Minister is a nationalist, and he says it in as many words that I'm a nationalist and I'm proud of it. The word nationalist, especially the times that we live in, India faces a lot of attack from the Western media, and we fight our own battles because they made nationalism a bad word, patriotism almost a bad word. So, what's your take on that? Look, nationalist, expression of nationalist is being kind of abused or misused. Yes. Misused, maybe this is a better expression. It's being misused. Because what nationalist means? Like your nation and put your nation first. Yes. Right? That's why, we are careful as well because, we are living in a world where media has a strong impact. That's why we say patriotism. अचानक मंदी की चपेट में है तो भारत के वो कौन-कौन से कदम रहे जिन्होंने भारत का झंडा बुलंद कर दिया और दुनिया को लगने लगा कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था और मार्केट का केंद्र बनेगा और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वाकई 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी का लक्ष्य करीब आ रहा है। Maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. दुनिया की जिस तरह से राहुल गांधी डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पॉलिसी पर प्रहार कर रहे हैं, उसी अमेरिका से बुलंद भारत बनने की ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज आ गई, जिसमें कहा गया कि मोदी राज में चमक उठा हिंदुस्तान। देश के लोग भारत का कायाकल्प होते हुए देखेंगे। भारत का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक हाईवे, आधुनिक रेलवे, आधुनिक एयरपोर्ट दुनिया में किसी देश से कम नहीं होंगे। सीना ठोककर प्रधानमंत्री मोदी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का दम भरते हैं, भारत के विश्व गुरु बनने का सपना दिखाते हैं और कड़े फैसलों को लागू करने का सामर्थ्य रखते हैं। विपक्ष के तमाम आरोपों के बवंडर के बीच भी मोदी विकसित भारत के विजन को फुल स्पीड में दौड़ाते हैं, जिससे न सिर्फ भारत की तस्वीर और तकदीर बदली बल्कि भारत को देखने का वैश्विक नजरिया भी बदला। दुनिया की थाकड़ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली की लेटेस्ट रिपोर्ट यही कहती है कि आने वाला एक दशक भारत के नाम होगा और भारत ही ग्लोबल इकोनॉमी का एपिसेंटर बनेगा। गौर से देखिए, ग्लोबल एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में पूरा रोड मैप बता दिया। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि आज का भारत 2013 से अलग है। भारत एक दशक से भी कम समय में बदल गया है और 10 साल की छोटी अवधि में मैक्रो और मार्केट आउटलुक के लिए पॉजिटिव नतीजों से ग्लोबल इकोनॉमी में अपना स्थान बना लिया। विदेशी कंपनियां
कि आज जो विश्वास बना है भारत के ऊपर, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और भारत के उद्योग जगत में जो आत्मविश्वास बना है, जो 3Ds डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी ऑफ यंग पॉपुलेशन और डिमांड, ये 3Ds को आगे लेके अब भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बना है। देश की लाइफलाइन को नई रफ्तार मिल रही है। कम वक्त में सबसे ज्यादा सड़कें बनाने का रिकॉर्ड बन रहा है। देश में घर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हासिल हो रहा है। दुनिया की दिग्गज एजेंसी अगर भारत की शान में कसीदे गढ़ रही है तो इसकी वजह यही फैक्टर है कि भारत हर मोर्चे पर अच्छा काम कर रहा है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट एक झटके में तैयार नहीं की गई, बल्कि मोदी राज में भारत में आर्थिक सुधारों और आर्थिक मोर्चे के 10 बड़े बदलावों पर फोकस किया गया। पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट पर ग्लोबल सिचुएशन के साथ परखा गया। लंबे असेसमेंट के बाद आखिरकार मॉर्गन स्टैनली ने मोदी मॉडल पर मुहर लगाई और भारत की तरक्की की तारीफ। अब समझिए इसका आने वाले एक दशक में क्या प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल ग्रोथ में भारत अहम भूमिका निभाने को तैयार है। निर्यात बाजार में हिस्सेदारी दोगुनी हो जाएगी। जीडीपी में उछाल से मुनाफे में इजाफा होगा। तेल की कीमतों में कमी होगी। ग्लोबल मार्केट में भारत का दबदबा होगा। मोदी राज में भारत की बदली हुई तकदीर और तस्वीर से मॉर्गन स्टैनली को पक्का भरोसा है कि आज का बुलंद भारत आने वाले कल की महाशक्ति बनेगा, जो दुनिया भर में असरदार रोल प्ले करेगा, क्योंकि भारत ने बहुत छोटी सी अवधि में बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। आज दुनिया के कई देशों में बैंकिंग सिस्टम पर संकट है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के बैंकों की मजबूती की आज चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। ये बात भी देश के सामने है कि इन्हीं बदलाव पर विपक्ष के सबसे ज्यादा हमले प्रधानमंत्री मोदी पर हुए। जिस जीएसटी को कांग्रेस समेत विपक्ष का एक खेमा गब्बर सिंह टैक्स कहता है और जिस नोटबंदी को ढाल बनाकर मोदी की नीतियों को अनर्थशास्त्र तक कहा गया, अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब 2000 के नोट को आरबीआई ने वापस लिया था। तब याद कीजिए कैसे मोदी विरोधी खेमे ने आसमान सिर पर उठा लिया था और न जाने कैसे कैसे बयान सामने आए थे। राजनीति निष्ठुर होती है, हर क्रिया पर निर्मम प्रतिक्रिया देती है, मगर छोटे छोटे कदमों से मोदी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का हुनर जानते हैं। एक देश एक कानून यानी जीएसटी को लागू कराने के फैसले पर खूब आलोचना हुई थी, मगर इसका रिजल्ट ऐसा है जो किसी भी इकोनॉमी को प्रभावित करती है। जीएसटी कलेक्शन बढ़ने से भारत की इकोनॉमी को काफी मजबूती मिली है। भारत ने तेज ग्रोथ दर्ज की है। पिछले महीने भारत ने रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। पिछले 10 सालों में भारत में कॉर्पोरेट टैक्स 25% से कम हुआ। वो साल था 2016 का, जब देश में यूपीआई की शुरुआत की गई थी। मकसद था करप्शन रोकना, कैशलेस इकोनॉमी को बूम दिलाना, और पिछले 7 साल में यूपीआई से ट्रांजैक्शन इतना बढ़ गया है कि देश की जीडीपी में 76% तक पहुंच गया। दुनिया भर में चीन के बाद भारत का नंबर आता है, जहां सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन हो रहे हैं। आज दुनिया के 40%, 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होते हैं। आप अभी भारत आए होंगे तो देखा होगा, आज फल सब्जी या पानी पूरी के ठेले हो या फिर चाय की दुकान, सब जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। दुनिया में कोहराम मचाने वाली कोरोना महामारी का दौर कुछ कम हुआ तो रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध की ज्वाला भड़क उठी और पूरी दुनिया दो खेमे में बढ़ गई। महायुद्ध की चिंगारी का असर सीधा पड़ा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, जिसके आगे चीन और अमेरिका जैसी ताकतें भी भयंकर मंदी की चपेट में आ गई। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर पॉजिटिव माहौल दिख रहा है, तो इसके पीछे बड़ी वजह है न्यू इंडिया का दम और मोदी के 10 दमदार कदम। न्यूज़ नेशन हमने एक्चुअल में पूरी मिनी इंडिया को हम कहें तो ज्वाइन कर दिया, जहाँ पे हर स्टेट से एक ना एक बच्चा आया और हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं और पूरी इंडिया को पहचान पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। A leader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way, whereas leadership is the capacity that transforms thoughts into reality. I see Mr. Modi as a person who is having a leadership, a strong inbuilt leadership, and a strong motivator indeed. ये जो पहल है ये उन सारे युवाओं को याद दिलाएगी कि कौन थे ये नेशनल लीडर्स। जैसे कि आज हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 126 बर्थ एनिवर्सरी में उनके बारे में हमने बात की, तो ऐसी बहुत सारी चीजों का पता चला जो हम जानते नहीं थे। तो ये बहुत ही बेहतरीन पहल है। ऐसे आयोजन होने चाहिए क्योंकि यूथ को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। मैं आज से पहले कभी दिल्ली नहीं आई हूँ और इस प्लेटफॉर्म के कारण आज मैं यहाँ हूँ और पीएम से इंटरेक्ट किया हमने, तो मुझे लगता है कि ऐसे आयोजन बार बार होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज बीन अ वेरी वाइब्रेंट एंड अ डायनामिक लीडर फॉर आवर नेशन, सो वी यूथ्स really take inspiration from his way of governing India, the new changes that he has been bringing, and especially he has inspired a lot of youths like us. I would like to say that the leadership qualities of Prime Minister Narendra Modi ji and his honesty is not only inspiring the youths of country but also the millions of people all over the world. I connect his initiative as an ideology of Netaji Subhash Chandra Bose. As it says, one person died with an idea. The idea after his death incarnates in the life of 1,000 people. So I think he followed this rule of Netaji Subhash Chandra Bose. जब हम देखते हैं कि 16 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चों को पार्लियामेंट में जाकर ये सब कुछ करने का मौका मिल रहा है, अपने विचार रखने का मौका मिल रहा है, तो यही अपने आप में इतनी बड़ी इंस्पिरेशन बन के बाहर निकलता है कि किस तरीके से वो आगे जाके किस तरह से भारत का भविष्य बना रहे हैं। ये आयोजन
आगे कई वर्षों तक याद रहेगा और आगे के कई वर्षों तक ऐसे अन्य कार्यक्रम भी होते रहेंगे जिससे कि हम युवाओं को प्रत्यक्ष उन चीज़ों से जुड़ने का मौका मिलेगा जो केवल हम दूर से देख रहे थे. Charge of the task force to tackle the coronavirus outbreak. Now, India has accomplished the feat of organisation, a video conference between 8 nations in just 48 hours. Prime Minister Modi is the first world leader to have called for a joint action plan between countries to contain the fast-spreading outbreak. All SAARC nations welcomed India's move, saying that they want to work closely with New Delhi to chalk out a strategy to combat the deadly disease. Now, praises were not just limited to South Asia. Leaders from other parts of the world also reached out to Prime Minister Modi. Among the first to call was British Prime Minister Boris Johnson, who discussed coordinated international efforts to tackle the outbreak with Modi. Australian Prime Minister Scott Morrison lauded Prime Minister Modi's efforts to organise a G20 link-up. Listen in. Also aware that Prime Minister Modi is keen to organise a link-up between all the G20 leaders. I think that's a commendable initiative. Australia obviously supports that, and I've communicated that. That's a matter for the Saudi government, who is the president of the G20 this year. But the Prime Minister and I agreed last night that an even more urgent meeting that would be needed would be a further meeting of the G20 finance ministers and central bank governors. Several international organisations are following suit. Now, this says the G7 will also be organising a video conference on COVID-19 containment measures. I don't need to tell anyone here. He is the most popular world leader for a reason. I think you are an inspiration for the rest of the world. Which I think is that the most loved one of all around the world. Prime Minister Sri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude. I am a fan of Modi. His vision for digital India, was ahead of its time. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी I said to my friend, the Prime Minister, before the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. I think is that the most loved one of all around the world. But I mean, this is really proven that he has been a major leader, and congratulations for that. I think you are an inspiration for the rest of the world. You have set some very ambitious targets when it comes to clean water for over 1 million households and for renewable energy, including offshore wind. I am convinced that India and Denmark have a huge untapped trade and investment potential. Prime Minister Sri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude. When the world locked its borders and globalization failed, you showed the world that globalization can still succeed and there is still love when the hardest of times hit us. It was an honor to meet Prime Minister Modi during a historic visit to the US. His vision for digital India, was ahead of its time. I now see it as a blueprint other countries are looking to do. And, the follow-through on the scaling up of India's digital stack
as a model other countries are thinking about? Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which is something that we intend to do. I am a fan of Modi, so. 2014 में आए थे तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। जब भ्रष्टाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे, लाखों करोड़ के घोटाले अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर रहे थे, गवर्नेंस फ्रेजाइल फाइल में देश की पहचान होने लगी थी, लीकेजेस को हमने बंद किया, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई, हमने गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्चने का प्रयास किया। और आज मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो सिर्फ तिजोरी नहीं बढ़ती है, देश का सामर्थ्य बढ़ता है, देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ता है और तिजोरी का पाई पाई लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे ही शख्सियत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की भी है और यही वजह है कि कई पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को नरेंद्र मोदी में एक डिक्टेटर इन मेकिंग दिखता है तो किसी को उनमें अखंड भारत का सपना पूरा करने की क्षमता रखने वाला जननायक। लेकिन इन दोनों कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपेक्टेशंस में भी एक बात तो कॉमन है कि सभी नरेंद्र मोदी में एक स्ट्रॉन्ग लीडर देख रहे हैं और इसीलिए वो ये मानते हैं कि उनकी ये क्षमता है कि वो भारत के प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को ही एक अलग दिशा दे सकते हैं। यही नहीं, हमने हाल के रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा कि दुनिया पीएम मोदी को टकटकी लगाए देख रही थी कि क्या मोदी मैजिक इस युद्ध को भी विकराल होने से पहले रोक सकता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या ये केवल उनकी हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स का नतीजा है? लेकिन शायद उसका जवाब तो मोदी जी ने खुद ही सबका साथ सबका विकास की अपनी योजना और ट्रिपल तलाक जैसे इशू को रिजॉल्व करके दिया है। तो फिर नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है कि लोग उनसे ऐसी अनगिनत उम्मीदें लगाए बैठे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी से पहले भी 13 जनप्रतिनिधि भारत के प्रधानमंत्री की इस कुर्सी की शोभा बढ़ा चुके हैं। फिर वो क्या है जो उन्हें खास बनाता है और उसे अलग बनाता है? Diaspora and had the opportunity to participate in the roundtable today with Prime Minister Modi, and it was just excellent. He was more than willing to have a dialogue with us, and I found it very productive, and we congratulate India on their tremendous pro-growth policies. We just left an outstanding meeting with Prime Minister Modi. One of the things that stands out is what an authentic leader he is, genuinely listening to everyone's input in the room. And while I went into the meeting optimistic about India, I am even more optimistic about India and his firm intent to continue to help with the ease of doing business, and that is a win-win for both India and IBM. He was very open to listening to various perspectives from the business leaders and provided responses, again, emphasizing his government's focus on encouraging investment in India.
economic outlook? Are you ready to invest? Yeah, absolutely. We're in the life insurance sector. We're MetLife, and we consider India a strategic growth market for us, and we're very encouraged by the recent pro-growth. Are you impressed by the Prime Minister's Yeah, very much so. specific things he told you? His willingness to listen to different perspectives and to take them into considerations as he formulates policies for his government going forward. Very encouraging. Can you give us a sense of the meeting? What was discussed, and are you, as a CEO, impressed by the economic outlook of India? Well, investment climate? as the prior CEO of Cisco for 20 years and making it our second world headquarters 20 years ago, and as representing the U.S.-India Strategic Business Partnership Forum, working together in terms of how our countries can work together, not just at government and business, but also at the citizen level in a win-win. The session was amazing. I love your Prime Minister. He obviously understands the direction. He's putting in place innovation ideas. How is this inclusive across all the citizens with India? And if you watch, each of the CEOs came away with even a stronger view, not just invest in India, but how do you innovate in India, and how do we also bring this beyond just economic returns, but for the benefit of society. What happened in the meeting? Yes, it was a very positive meeting, and the Prime Minister was soliciting inputs on things he could do to improve business in India. I think there was a very direct conversation, very good comments and suggestions made, and very much an openness on the part of the Prime Minister to consider these things and be helpful. Basically, we talked a lot about the progress that India is making, the changes that the Prime Minister has been making, how the ease of business has improved a lot in India, and then he asked several CEOs to give remarks on how can India progress more, and we went around the table, and everybody had suggestions for the Prime Minister. I don't know how he's going to keep them all into account, but he was certainly willing to listen to all of it. I think it's probably the country that has the biggest future ahead of it. We with Mondelez and our Cadbury chocolate are very invested in India. In the previous 10, so you get a sense of what has happened in India across various parameters in the past decade. So we'll start with national highways measured in 1,000 kilometers. Between 2006 and 2014, and all of this is for the fiscal year, we had 25.7 thousand kilometers. That, from 2015 to 2023, went up to 53.7 thousand kilometers. Let's now look at the broadband subscriber base, which between 2006 to 2014 stood at 58.9 million subscribers. From 2015 to 2023, went up to a whopping 771.3 million subscribers. Let's now look at renewable energy. This in gigawatts. From 2006 to 2014 stood at 25.7. In the past decade, 95.7 gigawatts of renewable electricity. Let's look at railway routes which have been electrified, again expressed as 1,000 kilometers. Earlier it was 4.1 thousand kilometers, which was 6.3% of the total railway routes were electrified. Now 42.3% of the total railway routes are electrified, which is 28.8 thousand kilometers. So if I were to look at this data, Rhythm, and I wanted to look at digital transactions as well, in FY 2017, digital transactions as a percentage of GDP stood at 8. Next year it went up to 12, then 21, 29, 40, 58, now 76%. As a percentage of GDP, 76% of transactions are digital. Now this, Rhythm, is quite phenomenal, and you at Morgan Stanley would be able to compare how India is progressing on these parameters with the kind of progress that's been achieved in other countries of the globe. And when you do that, of course India is growing. But how is India growing in your view across these parameters in comparison to the rest of the world, especially those countries that are in India's peer set? So Rahul, I think in terms of, say, digital economy, I think we've made far more progress than the rest of the world. So let me just give you one example. India is less than 4% of world GDP, but accounts for around 40% of all digital transactions. So the irony here is that if you look at modern things, India is actually progressing much faster. Some of the more painful things to fix are in the infrastructure space. So that's where we lag behind considerably since independence. And there's a fair bit of catch-up to do. And there's still more catch-up to do over the next 10 years. We still need to add a lot more to our infrastructure. So I think when you look at India, I think in soft metrics like digital, like, say, services exports, we're doing very well. In hard stuff like physical infrastructure, we've lagged behind. Now, there has been some catch-up in the last 10 years, but we have some more miles to travel before we can say that we are at developed nation status. It may take more than a decade to get there. One of the things that concern me as I look at the percentage of GDP which is being invested in, we go back to 2001 where it stood at 26%, going up to 35% in 2005. In 2017, for example, it's at 32%. In 2021 at 27%. Now, what you're seeing on that graph are the estimates for the future, where in 2025, you're anticipating that investment as a percentage of GDP will stand at 35, 2029 at 34, 2033 at 33. So you're not really seeing investment as a percentage of GDP go up very dramatically. That's something that concerns you, because from what I understand, at a time when countries like Japan, South Korea and China were really at the fastest pace of their growth trajectory, investment as a percentage of GDP constantly seem to be going up. Yeah, so that has been a problem, and I think two big changes have happened in the last 5-7 years, which make me quite optimistic about the investment share of GDP. So the first is that we have managed to reduce subsidy burden. And the reason why we've been able to do that is because of direct benefits transfer. So again, this is down to technology and it's down to India Stack.
the government is able to identify intended beneficiaries and is able to transfer cash or time to those people without any leakages. So, if you take out the COVID period, because during COVID, these expenditures did have to go up, but if you X out the COVID period, we managed to actually shave a considerable amount of subsidy expenditure, which was largely leakage in the system. That money has now been put into infrastructure. So it has released capital for the government to build more infrastructure. The other thing that has happened is that there is a much better environment for investments in the corporate sector, private corporate sector. So the private corporate sector enjoys lower taxation, enjoys production-linked incentives. For the first time in the history of this country, the government is taking tax dollars and giving it to companies and telling them, go and invest. And I think you will see an upside surprise on the investment cycle. Now, this works very well for the country, as you very rightly point out, because when companies invest, they create jobs. When they create jobs, they create wages, and you get a virtuous cycle of prosperity until, of course, the investment ratio goes through the roof, and then things start getting messy. But at the starting point of where we are in terms of, say, balance sheets, in terms of the investment ratio, I think these numbers are only going to go up in the next 5 years. The other thing which I'll highlight here is that the forces around the world are aligning in India's favor. So there is a China plus one happening. So a lot of companies are looking to diversify away from China, and India is a natural place to go to. Why? One is, of course, as I pointed out, there are government incentives and there's a better environment to do business. But two, most significantly, India is one of the best places in terms of markets. I think you spoke about that earlier. It is a place where I think a lot of companies are going to try and build their markets and try to grow their revenues. So companies will find it very attractive to be in India over the next 10 years, which is why I think this investment ratio is going up, and that's good for the economy. आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। लंबी कतारें किसी से छिपी नहीं थी। साल 2014 मैं पहली बार केंद्रीय सत्ता की कमान संभाली नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। देश में शुरू हुआ नए अवसर, नए इंफ्रा का नया दौर। हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। छत का सपना संजोए लोगों को मिले प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान और मिला गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर। पहले हम कच्चे मकान में रहते थे, नली वाले में, और पानी बहुत टपकता था और मकान भी नहीं था, और अब हमको प्रधानमंत्री आवास योजना मकान मिला। बदलाव का दौर उन गांवों तक भी पहुंचा जो आजादी के बाद 70 साल तक भी अंधेरे में डूबे थे। ऐसे ही 18,000 गांवों की दशा बदली और गांव रोशन हो उठे। वंचितों, शोषितों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को बदलने में उज्ज्वला योजना ने भी अहम भूमिका निभाई और निःशुल्क गैस कनेक्शनों ने करोड़ों महिलाओं और परिवारों की जिंदगी बदल दी। सामाजिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव लेकर स्वच्छ भारत भी आया। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को जनता का साथ मिला और देश 100% ODF बना। पहले आगे से शौचालय नहीं था, तब बेटी पुतो बाहर जाते। आप है कि शौचालय बन गया है, तब अपना बेटी पुतो बाहर नहीं जाता है। साल 2020 जब देश के सामने कोविड-19 महामारी की चुनौती आई, तब सरकार मददगार बन सामने आई। राशन की चिंता में परेशान लोगों को राहत दी और शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उसी दौरान वन नेशन वन राशन कार्ड को भी लागू किया गया, जिसके बाद राशन कार्ड धारी देश के किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से राशन ले सकता है।
महामारी के दौरान आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने ठेला रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में 10,000 का ऋण दिया जाता है। बैंक और नगर निगम के प्रयासों के द्वारा मुझे आसानी से 10,000 का ऋण उपलब्ध हो गया। सर मैं वो 10,000 का ऋण चुका चुकी हूँ, मुझे 20,000 का भी ऋण प्राप्त हो गया है। सर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाते हुए किसानों श्रमिकों के लिए जहां मानधन पेंशन योजना की शुरुआत की तो सभी के लिए अटल पेंशन योजना की भी। साथ ही किसान सम्मान निधि के तहत सरकार देश के किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के जरिए संपत्ति विवाद को कम करने और ग्रामीण इलाकों में मालिकाना हक सौंपे जाने की एक बड़ी पहल भी हुई। आर्थिक सामाजिक विकास की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन देश में शुरू हुई। पानी की कमी से जूझते इलाकों तक पाइप के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचा और करोड़ों परिवारों के जीवन स्तर में आमूलचूल सुधार हुआ। जल जीवन मिशन की तरफ से घर घर टोटियां लग गई हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। जरूरत कुपोषण के कुचक्र को तोड़ने की भी थी। सरकार ने चुनौती का समाधान करने के लिए साल 2017 में मातृ वंदना योजना और साल 2018 में राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की। योजना से 10 करोड़ से अधिक परिवारों को मिली सालाना 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। अब एक और जहां गरीबों का इलाज आसानी से हो पा रहा है, वहीं जन औषधि केंद्रों ने मरीजों तक सस्ती दवाएं पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। मेरी दवाइयाँ जो है 5,000 की आती थी और अब मेरी दवाएं 1,500 की आती हैं। मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही मुद्रा योजना ने देश में 35 करोड़ लोगों के सपनों को उड़ान दी है। बीते 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि अब गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा और शोषित वर्ग को सम्मान और स्वाभिमान मिला है। करोड़ों लोगों को 4 लाख रुपया तक के दुर्घटना और जीवन बीमा की सुविधा मिली। करोड़ों भारतीयों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित पेंशन की व्यवस्था मिली। अपना पक्का घर, टॉयलेट, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बैंक में खाता, ऐसी सुविधाओं के लिए तो गरीब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट करके जिंदगी पूरी हो जाती, वो हार जाते थे। हमारी सरकार ने इन सारी परिस्थितियों को बदला। मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े। मोदी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं की दिशा में कई मंजिलें तय की हैं, लेकिन लक्ष्य 100% का है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का मंत्र लिए सरकार लगातार देश की विकास यात्रा को और तेज गति दे रही है। नई ऊर्जा, नए लक्ष्यों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प 130 करोड़ लोगों के सपनों का नया भारत बनाने का है।